Students, now start our lesson 20, final step to freedom. इस लेसन में हमने सुभाष चंद्र बोस, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, साइमन कमीशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू लीडर्स, इंडिया विंस फ्रीडम किया था. स्टूडेंट्स टिक द करेक्ट आंसर्स कर चुके हैं हम, राइट ट्रू एंड फॉल्स भी कर चुके हैं. आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट नोट स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस. नोट डाउन करिए. आफ्टर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन more and more people of India became aware of the injustice caused by the British. They felt the need for an organization which would help in educating the Indian about the policies of the British. As a result, the Indian National Congress was founded in 1885 by A.O. Hume. Student, I repeat it again. आपका शॉर्ट नोट है इंडियन नेशनल कांग्रेस. आफ्टर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, more and more people of India became aware of injustice caused by the British. They felt the need for an organization which would help in educating the Indian about the policies of the British. As a result, the Indian National Congress was founded in 1885 by A.O. Hume. नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी. चंद्र बोस इन 1941 टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. चंद्र बोस इन 1947. यहाँ से लिखिए इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाय Subhash Chandra Bose in 1941 to fight against the British. The Indian National Army also had a women regiment known as Rani Jhansi Regiment. Number 3, civil disobedience movement. After the boycott of the Simon Commission, the Congress decided to demand Purva Swaraj or complete independence for India in 1928 at Lahore. Complete independence for India is 1928 at Lahore. Soon Gandhiji started the civil disobedience movement in early 1930 with the Dandi March. Gandhiji along with his followers led a procession from ashram in Ahmedabad to Dandi to break the salt law. Students, I repeat it again. Civil disobedience movement. After the boycott of the Simon Commission, the Congress decided to demand Purva Swaraj or complete independence for India in 1928 at Lahore. Soon Gandhiji started the civil disobedience movement in early 1930 with the Dandi March. Gandhiji along with his followers led a procession from the ashram in Ahmedabad to Dandi to break the salt law. Students, यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Why did the Indian boycott Simon Commission?
देयर वॉज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन, कोई भी एक भी आदमी इस कमीशन में नहीं था, साइमन कमीशन में. दिस agreed the Indian greatly and they greeted the commission with the black flag dismoneration and the slogan Simon go back. स्टूडेंट इन क्वेश्चन आंसर्स को शॉर्ट नोट को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और मुझे सेंड करिए. दिस इज योर असाइनमेंट. नाउ गुड बाय.